Cuttack. Okay, thank you. Next. Tulasi Sahu Sir, from I am Keonjhar. Shravani Mahapatra from Jagatsinghpur. Okay. Sir, I am Apurva absent Devjani Sridhar where? from Cuttack. Okay, next. Next. Bhuvaneshwari Nayak from Mayurbhanj. Thank you. Next. Next, anyone? Smita Vera from Jattan. Thank you. Please give your introduction one after one. Your name and the locality. Ravi from Jharsuguda. Okay, thank you, Ravi. Thank you, everyone. Once again, welcome from IGNU Bhubaneswar. I am Dr. Ratnakar Mahapatra, Resource Person of Political Science. Today, I am going to teach comparative politics issues and trends MPS-4. It is a very interesting subject. Do you know about the comparative politics? So when you learn that topic, you can be happy and feel more comfortable of that topic. Please write down the today's lesson. Please write down the today's lesson. I will start the unit 1 comparative politics. Which topics are covered today? Which topics are covered today? Please write down. The paper name is MPS-4 Comparative Politics Issues and Trends. Unit 1. There is the introduction chapter. Meaning of the comparative politics. Number 2. Nature and scope of comparative politics. Number 3. Comparative politics and comparative government. Number 4. Evolution of comparative politics. Number 5. Comparative methods. Number 6. Contemporary significance of comparative politics. Today we will discuss these topics. Please keep your notebook and write short notes when I teach you some definitions or some notes, or write down in your note copy. Now I start that topic about the comparative politics or meaning of the comparative politics. Please, who one do not understood, have any doubt, you can ask me about the topic. जो पिला माने बुझी पारिबो नाही आवश्यक पड़ले से माने मते पचारि पारिबे कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट नुए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कंपैरेटिव मीन्स तुलना करिबा सपोज यू एंड योर फ्रेंड both are compare each other how to looks how your quality and your friends quality you must be compare each other मो सांग रो अधिक भल पाठ होउची ना मोर भल पाठ होउची मो सांगर अधिक बळ ना मोर अधिक बळ that types of compare keeps your mind so it is a comparative like that
Suppose you buy a new car. आपण गोटे नुआ कार आनिले आपण पड़ोसी घर नुआ कार अच्छे निश्चित भाव में आपण माइंड रे आसीबो आम कार देखा भलो ना तांको कार देखा भलो जदि तांकर भलो थिबो तुम माइंड रे निश्चित आसीबो जे आमे आउटे भलो कार आनतिले भले थांता लाइक दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट like that like as a chapter. First of all, what is comparative politics? The study of comparative politics involves conscious comparison in studying political experience, institutions, behavior, and the process of the system of a government in a comprehensive manner. It includes the study of even extra constitutional agencies having their immediate connection, open or tacit, with the formal government organs. It is therefore concerned with the significant regulatories, similarities, and differences in the working of the political institutions and in the patterns of political behavior. In simple words, we can say, अति सहज भाषा में कहि परिबा, comparative politics involves a comparative study of various political system either as a whole or do a comparative analysis of their structures and functions. Comparative politics does not anything. It is a methodological apology, methodological subject. Comparative politics is a methodological subject. साधारणतः तुलनात्मक राजनीति कहले विश्वर प्रमुख शासन व्यवस्था सरकारी अनुष्ठान सेमानंकर कार्यकलाप और आचरण संबंध रे अध्ययन को बुझाई थाए। विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थार सुगुण और दुर्गुण को समीक्षा करी एक निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत हेबा हेउची तुलनात्मक राजनीतिर प्रमुख विषय वस्तु। अन्य अर्थ रे कहबा को गले आधुनिक विश्वर विभिन्न राष्ट्र थिबा शासन व्यवस्था राजनैतिक कार्यकलाप प्रक्रिया क्षमता मध्य तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति मध्य कहा जाए। केतक दार्शनिक मतरे राजनैतिक कार्यकलाप ओ जेउ परिवेश रे राजनैतिक वाद विवाद सृष्टि और समाधान होता है ताहार तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति कहा जाए। विशेषकर शासन व्यवस्था राजनैतिक कार्यकलाप राजनैतिक प्रक्रिया राजनैतिक क्षमता उपरे ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आलोचना करुथाय। सपोज यू आर इंडियन, आई एम अमेरिकन, यू लिव इन इंडिया, आई लिव इन अमेरिका। आपण मानक मध्य रे ये चिंता आसुथबो ये कंपेयर इंडियन आ अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन भितर गोटे कंपेयर आसुथबो इकोनॉमिकल स्फीयर हो बा पॉलिटिकल स्फीयर हो बा डिफेंस स्फीयर हो अमेरिका आमठू बड़ो ना इंडिया ताठू बड़ो। ये जो कंपैरिजन हुए कंपैरिजन हेले कोन हबो जदि ताठू आमे अधिक बड़ थिबो इंडिया हिसाब रे तले आमे प्राउड फील करबो। जदि अमेरिका आमठू बड़ थिबो इंडिया छोटो थिबो आमे जो टेक्निक गुडा सिखिबो इकोनॉमिकल बा टेक्नोलॉजिकल साइंस अन्य जो स्फीयर गुडा अछि ताको आमे तांकुटू सिखिकी आमे सहित समकक्ष हबो। तेणु सेटा प्रोसेस पॉलिटिक्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होछि सेही मैटर आमे सर्वदा अन्य देश सहित तुलना करिबा हला जे आम देश केते उन्नत अन्य देश ठारू। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर it was a new topic, it was came to the new topic of the comparative politics। द्वितीय विश्व युद्ध पर विशेष करी 1950 और 1960 ये जो 10 वर्ष मध्य तुलनात्मक राजनीति विज्ञान एक अंश विशेष रूपे विकास लाभ करिथिला। आपण माने पढ़िथिबे द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल व्हेन ही रोट हिज बुक द पॉलिटिक्स ही फॉलो द 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। राजनीति विज्ञान जनक ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल तांकर पुस्तक लेखिबा पूर्वरु
158टी संविधान सरकार को अध्ययन करी तांकर पुस्तक से लिखिथिले। तो से समय अरिस्टोटल एंड प्लाटो दे हैव यूज्ड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो निसंदेह आमे कहि परिबा जे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इट इज नॉट ए मॉडर्न मेथड, इट इज आल्सो ए ट्रेडिशनल मेथड। तो एंशिएंट पीरियड रु यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स व्यवहार करा जायथिला। Please note down some definitions of the comparative politics. Some definitions of the comparative politics. First, M.G. Smith. M.G. Smith. According to the M.G. Smith, comparative politics is the study of the forms. Comparative politics is the study of the form of political organizations, their properties, correlations, variations, and models of change. Again, according to the M.G. Smith, comparative politics is the study of the forms of a political organization, their properties, correlations, variations, and modes of change. Means M.G. Smith को मत अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनैतिक संगठन। Could you repeat it again? Hello. Yes, write down. According to the M.G. Smith, yes, according to the M.G. Smith, comparative politics is the study of the forms of political organizations, their properties, correlations, variations, and modes of change. आ माने होची तुलनात्मक राजनीति राजनैतिक संगठन स्वरूप सेगुड़िकर गुणधर्म परस्पर मध्य संपर्क परिवर्तन एवं परिवर्तन रीति गुड़िकर अध्ययन अटे। डेफिनेशन नंबर 2। Definition number 2. M. Curitis. According to the M. Curitis, comparative politics is concerned with significant regularities, similarities, and the differences in the working of political institutions and political behavior. Once again, according to M. Curitis, comparative politics is concerned with significant regularities, similarities, and differences in the working of political institutions and political behavior. ता माने होची तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक अनुष्ठान और राजनैतिक व्यवहार गुरुत्व को नियमितता एवं सामंजस्य और पार्थक्य सहित संश्लिष्ट थाए। हला नेक्स्ट अनदर डेफिनेशन comparative politics refers to the comparative study of the political phenomena. Comparative politics refers to the comparative study of the political phenomena to look for similarities and differences in them in order to understand, explain and predict them. Once again, comparative politics refers to the comparative study of the political phenomena
to look for similarities and differences in them in order to understand, explain, and predict them. Okay. ता माने होची तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक घटनावलीर अध्ययन करने सह सादृश्य और तारतम्य को अन्वेषण करी सेगुड़ी को बुझी बुझाइबा एवं सेगुड़िकर पूर्वानुमान करने को सूचाई थाए। चला सुंदर डेफिनेशन टे तीनटा हला गोटे लिखि दियो अगेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स comparative politics is concerned with the politics that is power relationship whether the occur and thus its jurisdiction is not limited to state only, rather to the non-state political activities. To state only, rather to the non-state political activities. Once again, comparative politics is concerned with the politics that is power relationship whenever they occur, and thus its jurisdiction is not limited to that only, rather to the non-state political activities. Comparative politics. Comparative politics involves a comparative study of not only the institutional and the mechanistic arrangements of a government, but also an empirical and scientific analysis of non-institutional and non-political determinants of a political behavior, such as pattern of a culture or the socio-economic environment within which the political system operates. Empirical study of a political process, structures and functions from the core of a comparative politics studies. Its aim is to build a scientific theory of a politics capable of explaining all phenomena of politics. केवल पॉलिटिक्स क्षेत्र रे हबो नाही ता सहित अन्य सब्जेक्ट क्षेत्र मध्ये आमे कंपैरेटिव करि परिबा तुलना करि परिबा एजुकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी any such cases we can compare to one to another nations. Now point number 2, nature of comparative politics. Now I am discussed about the nature of comparative politics. Please write down nature and scope of comparative politics. राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रो प्रकृति कोन प्रकृति परिसर विषय आमे आलोचना करिबा। प्रथमे कहली जे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तार मुख्य प्रकृति बा मुख्य उद्देश्य हला कोन ना राजनीतिक क्षमता राजनीतिक सिस्टम राजनीतिक प्रक्रिया को से यह आलोचना ही करिथाय। आ तार उद्देश्य कोन ना तुलनात्मक राजनीति विश्लेषणात्मक परीक्षा मीन्स एनालिसिस और पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन ऊपर विश्वास करे जोटा कि मॉडर्न थ्योरी ऊपर बेस्ड अछि। एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन ऊपर यह लक्ष्य करे। यही पद्धति सरकारी कार्य मूल्यांकन परिवर्ते प्रशासनिक कार्य वर्णना करा जायताय। बहुत सरकारी हो पहले इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल जा कहली सरकारी हो बेसरकारी क्षेत्र या सब क्षेत्र या कंपेयर करिथाय।
Now, nature of the comparative politics. Comparative politics seeks to analysis. Comparative politics seeks to analyze and compare the political system operating in various countries. In doing so, it takes into account all the three connotations of a politics. First, political activity, political process, political power. Three connotation first political activity, political process, and a political power. The three main component of the political comparative politics. The nature मुख्य गुण एटा the political activities consist of all the activities involved in conflict resolutions or in the struggle for power. Remember, where is the war, there is the peace. जोटी युद्ध सेठी शांति हला तेणु युद्ध और शांति परस्पर जड़ित तेणु कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये मध्य गोटे विषय वस्तु अटे it involves an analysis of the process by which the authoritative values are made and implemented in all societies. In this sense, politics stands for political process. Politics stands for political process. It involves the study all of formal as well as non-formal structures, for both formal and non-formal structures. The government and non-government, both government and non-governmental structures through which the political process get operationalized. The political process receives information and signals from the environment and then transforms these signals and information into authoritative values. Finally, politics being a struggle for power or the process of a conflict resolution. Process of a conflict resolution माने द्वंद्व को समाधान करिबा मीन्स शांति. Conflict resolution through the use of a legitimate power. It involves a study of a power or power relations in society. According to the Lasswell describes politics as the process of a shaping and sharing of a power. तेणु जानी तो पॉलिटिक्स माने पावर क्षमतार अध्ययन. सबुठु पॉलिटिकल पावर विश्वर सबुठु सर्वशक्तिमान पावर रूपे परिचित. सेते लास्वेल कहले पॉलिटिक्स आज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. रॉबर्ट हॉल holds that politics involves power, rule, and authority to a significant extent. Hence, the study of politics naturally involves the study of political power. सीधा कथा बुझी गले पॉलिटिक्स माने आमे पावर को अध्ययन करिबा. काहेकि ना पॉलिटिकल पावर इज ए सुप्रीम पावर ऑफ अदर पावर्स. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स a comparative study of political activities, political process, and struggles for power in various political systems. It seeks to analyze and compare political systems in a holistic way as well as through a comparative analysis of their structures, functions, infrastructures, and process. Holistic way means समस्तक पई जेटा समस्तक पई एप्लीकेबल होइथाय. Once again, राजनीति हेउची एक धारावाहिक परिवर्तनशील और सार्वजनिक कार्य जहाकी विभिन्न निष्पत्ति ग्रहण करिथाय
मानव चरित्र रु यार सृष्टि मात्र तुलनात्मक राजनीति क्षेत्र रे राजनीतिर तीनोटी दिग रही जोटा मु कहली एक राजनैतिक कार्य दुई रे राजनैतिक प्रणाली तीन रे राजनैतिक क्षमता यह राजनैतिक कार्य उपर जेतिकी गुरुत्व दिए सेतिकी मात्रा रे तालीम प्राप्त कार्य पई मध्य ध्यान देइथाय क्षमतार तुलना ही तुलनात्मक राजनीतिर मौलिक तार आधार अटे राजनैतिक कार्य राजनैतिक उद्यम एवं द्वंद्वर समाहार रे जनस्वार्थ को सुरक्षा देइथाय संघर्ष ह्रास एवं समाधान राजनीतिर कौशल को सुसज्जित करिथाय राजनीति को जो माने मूल्यबोध भित्तिक कहंती सेमाने क्षमता उपरे गुरुत्व दियंती क्षमता बिना राजनीतिर रूप नाही तो क्षमता होची मूल जिनिस जहाँ राजनीतिर एक अंश तेणु राजनीतिक कार्य सर्वदा क्षमता और जीवन शैली उपरे पर्यवेसित राजनैतिक कार्यावली संपर्क में सूचना देइथाय यही कार्यावली साधारण जीवन शैली को प्रतिफलित कराए समस्या जेते प्रकार समस्या गुड़ी को गोष्ठी माध्यम समाधान करा जायताय विभिन्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अच्छी जानिथिबो जेमति हमर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली पंचायत ब्लॉक ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या माध्यम सब समाधान करा जायताय यही समाधान पाई राजनैतिक चेतनार दृढ़ता आवश्यक हुए परिस्थिति राजनैतिक कार्य सृष्टि होता है तुलनात्मक राजनीतिर परिसरभुक्त हेउची राजनैतिक कार्य एवं राजनीतिक प्रणाली यह द्वारा जातीय एवं अंतर्जातीय नेशनल इंटरनेशनल सरकार प्रतिष्ठा हेबारे सहज होता है वर्तमान देखा आम ग्लोबलाइजेशन जुगरे वर्तमान इंटरनेशनल लेवल आम सारा वर्ल्ड को जोड़ी होइचे ग्लोबलाइजेशन जुगरे आम देशर आ सीमा नहीं सारा भारतीय माने सारा पृथ्वी रे अछंती पृथ्वी प्रत्येक देशर लोक अन्य देश रे जड़ित अछंती तेणु जातीय हो बा अंतर्जातीय सरकार प्रतिष्ठा हेबारे या सहज होता है क्षमतार बल मध्य राष्ट्र माने चापी हुई जाइथांती निष्पत्ति ग्रहण पाई गोष्ठी मानक मतरे प्रथमे समस्या निरूपण द्वितीय रे तथ्य संग्रह तृतीय रे तथ्य गुड़िकर प्रकरण एवं शेष रे राजनैतिक स्थिरता पाई समस्या एवं तथ्य प्रकरण माध्यम रे संपर्क स्थापन करा जाई थाए तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक विश्लेषण एवं तुलनात्मक प्रणाली उपरे अधिष्ठित तुलनात्मक सरकार राष्ट्र संपर्क अध्ययन करुवा बेले तुलनात्मक विश्लेषण मध्य करिथाय तुलनात्मक निर्दिष्ट समय पर भी हुई पारे तुलना द्वारा नूतन तथ्य उन्मोचन हुए जहाँकि शासन व्यवस्था संस्कार मध्य आनी थाए यार प्रकृति हेउची राष्ट्र मध्य गढ़ी उठिथिबा राजनैतिक अनुष्ठान मध्य तुलना करिबा सह बाह्य राष्ट्र मानक सह तुलना करिबा सर्वदा मु प्रथम कही जे आमे सर्वदा कंपेयर करिबा आम राष्ट्र सह अन्य राष्ट्र को कंपेयर करिबा जे प्रत्येक राष्ट्र किपरि परस्पर सहित पावर क्षेत्र में हो बा पॉलिटिक्स क्षेत्र हो बा गवर्नमेंट एक्टिविटी क्षेत्र हो सब क्षेत्र किपरि परस्पर अछन ताहा आमे कंपेयर करिबा तुलना सर्वदा तथ्य भित्तिक होइतबा दरकार खाली मनु कहितल हबनी अमेरिका बड़ अमेरिका से मनु तथ्य भित्तिक होइतबा दरकार एवं गवेषणात्मक हेबा दरकार विश्लेषणात्मक पंथा ही तुलनात्मक राजनीतिर मौलिक आधार यार शेष दिगटी हेउची राजनीतिर परिसरभुक्त क्षमता यह क्षमता संघर्ष तुलनात्मक राजनीतिर प्रसार घटाइबा सह याको अधिक दृढ़ीभूत करिबा Now I am going to say about the scope of the comparative politics scope परिसर
तुलनात्मक राजनीतिक परिसर केते दूर पर्यंत व्याप्त ताहा वर्तमान कहूची। फर्स्ट है एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। The analytical cum empirical method adopted by the writers belong to the latest phase has definitely enlarged the field of our inquiry. Our inquiry जते बड़ परिसर क्षेत्र हो। Eckstein has referred to the late decades of the 19th century as the period in which political science influenced by the primitive positivism affected a divorce between its normative and its descriptive concerns. He further says that in the realm of comparative government, Moore writers turned from a concern for the evaluation of governmental forms to a pure decisions. Thus, for example, a pure ideal type of democracy, while it continued to be a tool employed in normative political theory, no longer had utility for a specialist in comparative government, and the definition of democracy was loosened to permit inclusion of a congruence of actual governmental forms and socio-political conditions. राजनैतिक क्षमता विषय मध्य तुलनात्मक राजनीति आलोचना करिथाय। क्षमता बलय किपरि गोटे राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र आचरण को परिवर्तन प्रभावित करुछि ताहा मध्य आलोचना करिथाय। क्षमता को प्रभुत्व सृष्टि होइछि। गणतंत्र शासक माने क्षमता प्रयोग को युक्तियुक्त बोले प्रमाण करिया पई प्रभुत्व हासिल करने को प्रचेष्टा करता है। केवल गणतंत्र क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति रे क्षमतार प्रयोग कौशल, क्षमता हासिल, नियंत्रण और उद्देश्य संपर्क में आलोचना करा जाइथाय। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न कौशल और पद्धति संपर्क में आलोचना मध्य करिथाय। पॉइंट नंबर 2 study of the infrastructure. Study of the infrastructure. The study of comparative politics is not confined to the formal structures of a government as well as the trend with the traditional political scientists. If instead of a government, the term political system is used naturally, it becomes a part of the entire social system and the input-output process. पच्चू को पढ़े भी input-output process, modern political theory approaches. Input-output process includes all those forces of the environment that have their effect on the decision-making process. Thus, the role of political parties and pressure groups, for example, become as significant as the role of a legislature and executive in the study of a modern political system. Legislative body और executive body बर्तमान सेटा मुख्य भूमिका ग्रहण करिसंती। माने राजनैतिक कार्यकलाप अध्ययन क्षेत्र तांकर भूमिका मध्य रहिছে। आधुनिक राजनैतिक क्षमतार एक संघर्ष अटे। यही संघर्षर केवल नेतृवृंद नुहंती, साधारण नागरिक माने मध्य संपृक्त होइथांती। राजनैतिक कार्यकलाप संघर्ष और उत्तेजना सृष्टि हुए एवं यही उत्तेजना को ह्रास कराइबारे समाजर विशृंखला देखा दिए। सामाजिक मूल्यबोधगत प्रभेद हेतु एपरी संघर्ष देखा जाइए। प्रत्येक समाज संघर्ष अच्छी। तुम इतिहास पृष्ठा लेउटाओ देखिए प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष रही।
राजा राजा मध्य युद्ध राष्ट्र राष्ट्र मध्य युद्ध प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष देखा जाए शासक और शासित मान मध्य मूल्यबोध प्रभेद समाधान करने राजनैतिक कार्यकलाप दायित्व अच्छी 1917 मसीह जो रूस विप्लव राजा और प्रजा मध्य 1799 फ्रांस विप्लव राजा और प्रजा मध्य यही सब संघर्ष गुड़िक देखा मिलता है ये सब मूल्यबोधगत मतभेद दूर करने शांति प्रतिष्ठा करने राजनैतिक कार्यकलाप दायित्व मानविक प्रकृति मानविक आचरण मूल्यबोध आदर्शर प्रभेद हेतु अनेक समय उत्तेजना और संघर्ष सृष्टि हुए। बर्तमान देख ट्रम्प एमती एक विश्वर नेता जे कि प्रत्येक कथा और प्रत्येक कार्य विश्व एक आंदोलन सृष्टि करुच्ची इकोनॉमी क्षेत्र हो बा पॉलिटिक्स क्षेत्र हो बा वार क्षेत्र हो प्रत्येक कार्यटी देश पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा करुच्ची तो विश्व अर्थनीति को बिगाड़ी देउची तेणु शांतिपूर्ण बा हिंसात्मक पंथा अनुसरण करा जाय थाए शांतिपूर्ण उपाय गुड़िक मध्य कूटनैतिक प्रतिष्ठा करबा पई विचार बुद्धिर विनियोग करबा पई और बुझामणा इत्यादि प्रधान कार्य भाव गणा जाय थाए मात्र हिंसात्मक पंथा मध्य युद्ध विप्लव अन्यतम। नेक्स्ट emphasis on the study of a developing society. Study of a developing society. What has the added more to the significance of the study of a comparative politics is the emphasis on more writers on this politics of the developing areas. The study of a comparative government is no longer a study of the selected European or American governments. It is as the much study of developed Western governments as those of the developing political systems of the poor and backward of the Afro-Asian and Latin American world. पहला मैं जानी थी वर्ल्ड को तीन भाग में विभक्त करा जायछि इकोनॉमी क्षेत्र रे वर्ल्ड को तीन भाग में विभक्त कराई फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कौन ना डेवलप्ड कंट्री वेस्टर्न कंट्री गुडा को तांकू फर्स्ट वर्ल्ड रे विभक्त करा जायछि काहेकि ना वेस्टर्न कंट्री लाइक अमेरिका यूरोप ये सब टू डेवलप्ड तेणु तांकू वेस्टर्न कंट्री बा फर्स्ट वर्ल्ड रे विभक्त कराई। सेकंड वर्ल्ड कौन जो डेवलपिंग जो राष्ट्र गुड़िक डेवलपिंग प्रोग्रेस करुला सेकेंड वर्ल्ड बा ईस्टर्न कंट्री रूपे कह जाए ये ईस्टर्न कंट्री भितर इंडिया जाउची साउथ आफ्रिका जाउची अदर सम कंट्री जाउचंती एशियार। थर्ड वर्ल्ड कहले जो बिलु पोभाटी अति दरिद्रतम राष्ट्र विश्व बहुत राष्ट्र भी अच्छा जो खाइबा को पाउना पिंधा पाना शिक्षा तो पक्ष कथा स्वास्थ्य तो पक्ष कथा तो जो बेसिक नीड्स खाद्य वस्त्र बासगृह पाखे अभाव देखा जाए बहुत देश अच्छा कहला कौन कहला थर्ड वर्ल्ड कहला तृतीय विश्व कहला छड़ा लाटिन अमेरिका आफ्रिकान सम एशियन कंट्रीज ये सब होचंती तृतीय विश्वर कंट्री तेणु एमाने पॉलिटिक्स कौन एमान तो निजर स्थितित्व बजाय पारना पॉलिटिक्स को कौन चिंता करेंगे। हाँ आम आम टॉपिक पढ़ी जावा नेक्स्ट फोकस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच व्हाट हैज रियली एनरिच्ड द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एट द सेम टाइम मेड इट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट is the focus on interdisciplinary study. Writers have made more and more use of tools that they have borrowed from the disciplinaries of sociology, psychology, economics, anthropology, and even from natural sciences like biology, zoology, etc. A study of new topics like political development, political modernization, political socialization, political actualization, political change, political leadership,
and the like show that new political science has become the application of a sociological and a psychological analysis at the study of the behavior of a government and other political structures. ମୁଁ ପଛକୁ ପଢେଇବି behavioral theory जोटा कि या ऊपर अच्छी behavioral theory टा सेटा ମୁଁ ପଛକୁ ପଢେଇବି। राजनैतिक प्रक्रियार अध्ययन राजनैतिक प्रक्रिया कहले निष्पत्ति ग्रहण सहित संपृक्त समस्त कार्यकलाप को बुझाए। यही प्रक्रिया आभ्यंतरण उत्तेजना और मतभेद द्वारा प्रभावित होता है। यही प्रक्रिया सहित राष्ट्र और अणराष्ट्र संगठन गुड़िक संपृक्त थांती एवं सरकार एप्रति समर्थन प्रकाश करिथांती। सरकारी और बेसरकारी संस्था गुड़ सरकार संस्था सरकारी संस्था बेसरकारी एनजीओ सरकारी हो कि बेसरकारी संस्था गुड़िक मध्य अंतर्निहित संपर्क थाए। मात्र संघर्ष उत्तेजना सृष्टि हेबा परे साधारणतः सरकार निज जीत रे अटल रहंती तेणु विवाद अधिक तीव्र रूप धारण करिथाए। नेक्स्ट value free political theory. Finally, the subject of a political science has lost its normative aspect and assumed empirical dimensions in the sphere of comparative politics. The result is that value-free political theory has replaced value-laden political theory. For a long time, comparative politics appeared merely took for the similarities and differences and directed this towards classifying, discriminating or polarizing political phenomena. It is felt by several scholars is going beyond identifying similarities and differences or the compare and contrast approach to ultimately study political phenomena in a larger framework of relationships. This is felt would help deepen our understanding and broaden the levels of answering and explaining political phenomena. क्षमता सहित प्रभुत्व जड़ित क्षमता सहित प्रभुत्व जड़ित यही प्रभुत्व पारंपरिक वैधानिक बा कौनसी विशेष गुणर उत्पन्न होता है। प्राचीन काल रे शासक माने पारंपरिक प्रभुत्व उपरे गुरुत्व देउथिले। पारंपरिक मीन्स माने ट्रेडिशनल जा पाखरे गोटे सेमिति स्पेशल पावर थिबो त कुआ जे इंग्लिश रे करिस्मेटिक प्रभुत्व करिस्मेटिक अथॉरिटी हला। राजनैतिक सत्ताधारिकार माने सर्वदा निजर कार्य युक्तियुक्त बोली प्रमाणित करबाकू चेष्टा करिथांती। तुलनात्मक राजनीति यही क्षमता आहरण और विनियोग विषय रे आलोचना करिथाय। तुलनात्मक राजनीति केवल सांविधानिक अनुष्ठान रे व्यवहार बा राजनैतिक अभिज्ञतार विचार करि न थाए। सरकारक सहित संश्लिष्ट अन्य संविधान बहिर्भूत बा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन संगठन विषय रे मध्य आलोचना करिथाय। विभिन्न राजनैतिक अनुष्ठान सब किपरि कार्य करुछंती तार एक तुलनात्मक व्याख्या करिबा बा तुलनात्मक राजनीतिर व्यवस्था सृष्टि करिबा। यह केवल आईन प्रणयन आईन प्रयोग बा न्याय विचार मध्य सीमाबद्ध न थाए। मात्र अन्य संविधान बहिर्भूत संस्था चापगोष्ठी संपर्क मध्य व्याख्या करिथाए। चल एति था हमर नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स एति थाउ। हम नेक्स्ट पॉइंट को जिबा। नेक्स्ट पॉइंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। पिला माने नेक्स्ट नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट।
समस्ते भाबुते कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपेयर गवर्नमेंट एटा गोटे एका भलिया से एका नुहे कंपेयर पॉलिटिक्स जहा कंपैरेटिव गवर्नमेंट सेया नुहे बुझले कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अलग आलोचना करता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट मध्य ताहा अलग आलोचना करिता है देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट The study of a comparative government. The study of a comparative government and comparative politics are closely linked with each other. जेतिकी संपर्क अच्छी सेतिकी मध्य पार्थक्य अच्छी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आउ कंपैरेटिव गवर्नमेंट मो गुटे थाडी खाली कहूँ बुझिनियो पॉलिटिक्स आउ गवर्नमेंट है गवर्नमेंट है कार्यकलाप आईन प्रणाली क्षेत्र में आउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है राजनैतिक प्रक्रिया ऑब्जर्वेशन इनोवेशन आउ एनालिसिस माध्यम अध्ययन करा जाता है जिनस अलग है तेणु आउ थे कहूँ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर फिनर पॉइंट्स आउट 4 मीनिंग्स ऑफ द टर्म गवर्नमेंट फिनर पॉइंट्स आउट द four terms of government. It denotes activity of a process of a governing and the extent to which it exercises control over others. Indicates the state of affairs in which that activity or process is to found. Tells about the people who are the charged with the study of governing and denotes the methods of a system by which a particular society is governed. तुलनात्मक राजनीति विज्ञान अध्ययन एक नूतन दिग को उन्मोचन करिछि पारंपरिक पठन पद्धति उपरे असंतोष व्यक्त करी राजनीति विशारद माने एक नूतन पद्धति प्रणयन करिसंती यही व्यवस्था रे राजनैतिक घटना और सिद्धांत गुड़ी को वैज्ञानिक पद्धति रे अध्ययन करा जाए आधुनिक जुगरे तुलनात्मक राजनीति वास्तव राजनीति अध्ययन क्षेत्र रे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि जोटा कि मु साची मॉडर्न अप्रोच रे मु पढ़ेबी गवर्नमेंट इज ए स्टैंडर्डाइज अरेंजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस गवर्नमेंट काम है टेकिंग डिसीजन व्हिच अफेक्ट द होल ग्रुप देख भारत कथा कहबा आमे होच भारत नागरिक आमर भारत सरकार होच आम तत्वावधारक आमर प्रत्येक क्षेत्र से दायित्व नहीं थांती राष्ट्र कौन से अफेक्ट हेले नागरिक कौन से अफेक्ट हेले से दायी रुहंती वो कार्य करी थांती and the need of a government arises as it essential for the territorial association to adopt a common policy and as in many cases rival bodies of members advocate mutually exclusive politics. Alan Bell has tried to establish a link between the government and the politics. Link between government and the politics. There is no a great stress in both one informal political process than political institutions of the state. That is why Freeman points out that comparative politics is nothing else but a comparative analysis of various forms of government and diverse political institutions. Once again, Freeman points out that comparative politics is nothing else but a comparative analysis
of various forms of government and diverse politics institutions. Next, Jean Blondel also agrees with the view and says that Green Bundle says that comparative government can be defined. Comparative government can be defined as the study of patterns of national governments in the contemporary world. Although the two terms comparative politics and comparative government are used loosely and interchangeably, there is a point of a distinction between two. There is a distinction between comparative politics and the comparative government. While the latter covers a comparative study of different political systems with a special emphasis on their institutions and functions, the former has a broader scope so as to cover all the comes within the purview for the former, and in addition to that, all else that may be designated as the study of a non-state politics. In other words, the scope of a comparative politics is wider than that of a comparative government, despite the fact that the source of making comparisons in central to the study of both means politics and the government. The concern of the student of the comparative politics, the concern of a student of a comparative politics does not end with the study of role making, role implementing, and role adjudicating. गोटे पिला सेति भितर कन्फाइन रहिजबो नै जेमिति लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सेति से स्थिर होई रहिबा उचित नुहे सर आगो मध्य गोटे स्टूडेंट जानिबार रहिछि ए विषय रे Thus, the term comparative politics should be referred to the term comparative government, as the scope of the former is wider and more comprehensive to include all the essential characteristics that we have discussed under the preceding sections. Blondel कौन कहले that the term comparative government has two aspects, horizontal and vertical. Vertical comparison is a comparative study of the state, other association of groups that have their political characters and cast their impact upon the functioning of a political system. Horizontal, vertical. If horizontal comparison is a comparative study of the state or the national governments, comparative government can thus be defined in a preliminary fashion as the study of patterns of a national government in the contemporary world. The study of a comparative government is such. The study of the comparative government as such is much limited than that cooperative politics. Comparative government comprises the study of states, their institutions and functions. प्रत्येक state तो state institution को institution अच्छी political institution, not other institutions and functions. It does not take into account of the non-governmental institutions and it also not concerned with their functions.
it does not take into account of the non-government. Non-government means कोटा बुझुछो non-government ला कोटा बुझुछो जति सब इंस्टीट्यूशन अछि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन non-government ला कोटा हम देखिया पॉलिटिकल क्षेत्र रे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कोटा अछि कहले पॉलिटिक्स कहले हमर जो अछि सपोज पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली जुडिशियल सिस्टम ये सब अच्छे सब गवर्नमेंटल सिस्टम नॉन गवर्नमेंटल कहले जोटा कि प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर सेल्फ प्रेशर ग्रुप्स एनजीओ एटसेट्रा दे आर द नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स आउट पॉइंट कहबा जे कंपेयर्ड पॉलिटिक्स आउ कम्युनिटी भितर comparative politics is emerging as a distinct sub-disciplinary of a political science. Sub-disciplinary political science defined by both substantive and methodological criteria. Substantially, research in comparative politics seeks to account for the variance in outcomes among the political units on constitutional questions that have been posed in political theory. Comparative politics research places then outcomes on dimensions and seeks to account for the placement of political units on these dimensions. It then seeks a account for differences in placement along these dimensions among the political units and for the same political unity and different time periods. जोरा फास्ट हम कहली पॉलिटिक्स हो गोटे मेथोडोलॉजिकली हला मेथोडोलॉजिकली एन अर्लियर कंसर्न्स methodologically and earlier concerns about the comparative methods differentiated in form of the statistical and case study methods, and it emphasizes through the use of a strategy controls of the isolation of key variables. In the first component of the triptych method, cross-sectional or diachronic data are employed to find statistical regularities across the large number of similar unities, whereas the statistical technique were once seen as alternatives to the comparative methods. They are increasingly seen as an important element in the method, but only one step towards the explanations. Finally, last point I'm going to say, the last component in the triptych methodology is narrative. Comparatives examine real or virtual real cases to track historically and theorize empirically the translation of values on properties. Narratives address questions of process. Narrative offer the helpful in suggesting how statistical anomalies arising from contradictory results in cross society of and dichotomy analysis can be resolved. Furthermore, narratives provide reliable information on the measurement of key variables. Also in this theory, two cases as the comparative narrative demand methods of similarity and difference as the especially useful to making sense of cases that offer the regression link. तेणु वर्तमान मु जो कहूली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट विषय जो गोटे आम जो कॉन्सेप्ट दौली से चैप्टरटा आमर सरीगला है। तेणु आम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा कौन अच्छी ना इवोल्यूशन कौन अच्छी
इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ला माने नोट करो नेक्स्ट पॉइंट होची इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीतिर क्रम विकास मु फास्ट कहि सारची एटा 1950 रु 1960 ये जो डिकेड्स जायतला विशेष करी यार मध्य रे ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ता इवोल्यूशन होइथिला The nature and scope of the comparative politics has varied according to the changes which have occurred historically in the subject matter. The subject matter of comparative politics has been determined both the geographical square which has constituted the field of as well as dominant ideas concerning social reality and change which shared the approaches to studies. The first point of the historical development of comparative politics. Number one, the origins of comparative study of politics. कोड प्रथम एटा आरंभ होइतिला the origins of the comparative politics. In its earliest incrimination, the comparative study of politics comes to us in the form of studies done by the Greek philosopher Aristotle. मु सर्वप्रथमे कहिछि जे पढ़ा पूर्व प्रथमे कंपैरेटिव ता हमर जो फादर अरिस्टोटल आ गुरु प्लाटो से माने ही ए कंपैरेटिव मेथड ता को यूज करथिले तो सेउटु ही तार उत्पन्न आरंभ हेइथिला हला तो ग्रीक फिलोसोफर Aristotle studied the constitution of 158 states and classified them into the typology of regimes. His classification was presented in terms of both descriptive and normative categories. That is, he not only described and classified regions and political systems in terms of their types. Example, democracy जो आमे पढ़िथिले पूर्व चैप्टर जो पढ़िथिबो से गवर्नमेंट जो डिवीजन करथिले डेमोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी मोनार्की ये जो चारि प्रकार गवर्नमेंट कथा से कहिथिले से विषय मध्य से तुलना करी कहिथिले मनु किछि कहि नथिले से एते सब पढ़िला परे 158 टा कन्स्टिट्यूशन पढ़िला परे तांकर जो पुस्तक रचना करथिले सेते पय काल जोगी हेतिला से गवर्नमेंट कहिथिले डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट मोनार्की गवर्नमेंट एबे केते वर्ष विभक्त करिथिले. He also distinguished them on the basis of certain norms of good governance. On the basis of this comparison, he divided regimes into good and bad, ideal and privated. These Aristotelian categories were acknowledged and taken up by Romans such as Polybius से ख्रीष्टपूर्व 201 रु 120 जे पॉलिशियस जे लॉ विषय जे करते पॉलिशियस आ सिसरु जानिथिबो रोमान फिलोसोफर विषय पढाइतो आगुरु हला तो पॉलिशियस एंड सिसरु who considered them into formal and legislative terms concerned with the comparative study of regime types of repair in the 15th century with Machiavelli मध्य 15th century से मध्य यहाकू से व्यवहार करिथिले कंपैरेटिव स्टडी विषय से करिथिले जे आधुनिक युगर थिले. अगेन वंस अगेन प्राक आधुनिक पर्याय मीन्स प्री मॉडर्न स्टेज.
ପ୍ରି ମଡର୍ନ ଷ୍ଟେଜ। ସାଧାରଣତଃ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୁ ଆଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କରି ସମୟରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେ ସମୟର 158ଟି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ପଲିବିୟସ ଓ ସିସରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମୀୟ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍, ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବ୍ରାଇସ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେନ୍ଥାମ୍, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ସାର୍ ହେନେରୀ ମେଇନ୍ ଓ ଟକଭିଲି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ନିଜ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଅତୀତର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାକିଆଭେଲି ମଧ୍ୟ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଆମ ବାପା କେମିତି ଘର କରିଥିଲେ, ଆମ ଜେଜେ କେମିତି ଘର କରିଥିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଘର କରିବି, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜେଜେଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ ତାହାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ। ତେଣୁ କମ୍ପାରେଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ସବୁକୁ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଚରଟା ମନକୁ ଆସି ନଥାଏ, ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା 19th and 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ। 1920 ସେଞ୍ଚୁରୀ କେମିତି এই କମ୍ପାରେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା। ଦି ପ୍ରି ଅକୁପେସନ ୱିଥ ଦ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏଣ୍ଡ speculative questions concerning the good order or the ideal state and the use in the process of abstract and normative vocabulary persisted in comparative studies of the late 19th century and early 20th century. The late 19th and early 20th century signed the period when liberalism was the reigning ideology and the European countries enjoyed dominance in world politics. वर्ल्ड पॉलिटिक्स प्रथम ग्रीक तापर रोम ये सब आरंभ होता। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आगे आफ्रिका, लैटिन अमेरिका वी आर आइदर यूरोपियन कॉलोनीज और अंडर देयर स्पेस ऑफ influence as ex colonies comparative studies during this period. कौन सा व्यवहार करते? जेम्स ब्राइस से मॉडर्न डेमोक्रेसी, जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी विषय कहते। हर्मान फाइन्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट कहते। कार्ल जे फेड्रिक से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेसी विषय तुलना करते। मिचेल पॉलिटिकल पार्टीज उपरे से तुलना करते। आउ एम डुभेंगर पॉलिटिकल पार्टी में से तुलना करते। These studies were Eurocentric, that is confined to the study of institutions, governments, or regime types of European countries like Britain, France, and Germany. It may be the said these studies were in fact not
genuinely appropriate in the sense of they excluded from their analysis a large number of countries. खाली यूरोपियन कंट्री कथा कहीं कहबा एशियन कंट्री अमेरिका कंट्री मध्ये एते डेवलप कर any generation derived from the study confined to few countries could not legitimately claim having verified for the rest of the world. It may be emphasized here that exclusion of the rest of the world was symptomatic of the dominance of Europe of world politics. समस्ते जानिथिबो यूरोप माने केमिति वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंट्रोल करते भारत बात पनुथिला सातोडा महादेश थिला सातोडा जाक महादेश को यूरोपियन माने कंट्रोल करुथिले से माने कॉलोनी प्रतिष्ठा करिकि ता माध्यम रे पॉलिटिकल पावर को मध्ये से माने कंट्रोल करुथिले अमेरिका कथा जानिथिबो अमेरिका मध्ये से ता अधीन रे रखिथिला हैला which however shifting gradual to North America it is rooted in the normative values of Western liberal democracies which carried with the baggage of racial and civilization superiority and assumes of prescriptive character for the colonies former colonies. जो आधुनिक पर्याय कौन है ना यही पर्याय संपृक्त दार्शनिक माने विभिन्न राजनैतिक अनुष्ठान वास्तव धर्मी अध्ययन आरंभ करथिले विशेषकर आधुनिक पर्याय से माने केवल तथ्य संग्रह संपर्क समस्यार अध्ययन न करी विभिन्न राष्ट्र सामाजिक सांस्कृतिक ये समस्या गुड़िक संबंध से आलोचना करुथिले सेमाने मध्य विभिन्न सरकारी संगठन गुड़िक मध्य तुलनात्मक समीक्षा करुथिले यही पर्याय मध्य आंचलिक अध्ययन अनुष्ठान कार्य और बाह्य गठन संबंध में आलोचना करा जायताय देख आमे वर्तमान पाकिस्तान सहित इंडिया सहित चाइना आमे कंपेयर करूचे कोन कंपेयर करछे नॉट ओनली पॉलिटिकल पावर बट आल्सो द अदर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ये सब क्षेत्र में मध्य आमे सब आलोचना करूचे तो प्रत्येक क्षेत्र रे केमिति से सब हेतला तापर सबुठ बड़ कथा हला जो सेकंड वर्ल्ड वार परे सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिगड़ी जाइतला जो अमेरिका और रशिया सुपर पावर तैयारी हेले ये सुपर पावर तैयारी हबा द्वारा वर्ल्ड टोटल पॉलिटिक्स ता टुडे सेपरेट हे जाइतला हो आमे जा बर्तन पोस्ट मॉडर्न पीरियड को जे पोस्ट परवर्ती आधुनिक युग रे या किपरि हेतिला इवोल्यूशन मध्ये किपरि हेतिला विशेष करी मुजिबी 1980 मसिया कथा जे 1980 मसिया पर केमिति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रो जो डेवलप हेतिला ड्यूरिंग द लेटर 1970s and into the 1980s so 10 years till reflecting till backlash against tribullion intelligima number of theories and subject matters emerged into the field of comparative politics. These includes bureaucratic authoritarianism, indigenous concepts of change, transitions. Some scholars saw these developments as understanding and breaking the unity of the field which was being dominated by developmentalism. Others saw then the adding health diversity, providing alternative approaches and covering new subject areas. Almond, who had argued in the late 1950s that the notion of the state should be replaced by the political system which was adaptable to scientific inquiry, and Easton, who undertook to construct the parameters and concept of the political systems. तापरे जबा लेट 20th सेंचुरी जब विंश शताब्दी परवर्ती अवस्था या किपरि डेवलपमेंट करितला तो धीरे धीरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तार ग्रोथ हेतिला तेणु सिविल सोसाइटी डेमोक्रेटाइजेशन अप्रोचेस सिविल सोसाइटी कोन बुझी परतबो तो मॉडर्न सोसाइटी आमे जो रहउचो बर्तन हम सिविल सोसाइटी रहउचो ए सिविल सोसाइटी आमे कंपेयर केम करूचो हम
आमे विशेष करी खाली पॉलिटिकल क्षेत्र सोशल या कल्चर क्षेत्र आमे मध्य सिविल सोसाइटी रो अमेरिकन कर कल्चर अमेरिकन मानकर सिविलाइजेशन आमे देखुचु आ ग्रहण करूचु से बलिया इंडियन मानकर जो पीसफुल लाइफ अन्य मान ग्रहण देखुचंती ताको मध्य ग्रहण करूची तुम सिविल सोसाइटी रे ए जो कल्चर जो इंटर कल्चर रो हबा द्वारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रो डेवलपमेंट हेची the disintegration of a Soviet Union brought into the currency the notion of the end of history. In his article, The End of History, which was developed later into the book The End of History and the Last Man. से बहिर ना चेंज कर देले फास्ट लिखले एंड ऑफ हिस्ट्री तापर लिखले द एंड ऑफ हिस्ट्री ताकू ना चेंज कर लिखले द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन Francis Fukuyama argued that the history of ideas that ended with the recognition and triumph of a liberal democracy as the final form of a human government. The end of history invoked to stress the redominance of Western liberal democracy is in a way reminiscent of the end of ideology debate of the 1950 which emerged as the highest of the Cold War and the contest of the decline of communism in the West. कोल्ड वार विषय शुणी पे माने कोल्ड वार किपे पृथ्वी को दिभाग कर देतिला कोल्ड वार द्वारा नुआ पॉलिटिक्स नुआ आइडिया सब तैयारी हेतिला आम नाम कोल्ड वार पाई ही नाम नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट जोटा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से यार शुभारंभ करते ढाकार प्रधानमंत्री शुभारंभ करते तेणु कोल्ड वार पृथ्वीर जो राजनैतिक स्थिति को संपूर्ण भाव में बदली देइतिला द्वितीय विश्वयुद्ध पर केतेक अमेरिकीय राजनीति विज्ञानी तुलनात्मक राजनीति को अधिक गतिशील करते विशेषकर डेविड ईस्टन गैब्रिएल आलमंड लासवेल पाउल रॉबर्ट हाल एडवर्ड सिल्स लुसियान पाए सिडनी भरबा ये जो केतक अमेरिकन दार्शनिक माने से माने ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आउरी द्रुतगामी करैथिले जोटा कि आमे मॉडर्न अप्रोच रे पढिबा इन यही समस्त दार्शनिक माने राजनीतिक अनुष्ठान और प्रक्रिया मध्य तुलना करने सहित अंचल भित्तिक अध्ययन उपर मध्य गुरुत्व प्रदान करथिले जो पोस्ट मॉडर्न स्टेज उत्तर आधुनिक पर्याय कौन कौन सबू लक्षण सब देखा नहीं प्रथम यही पर्याय विशारद माने परीक्षामूलक अनुसंधान पद्धति अनुसरण कर विश्लेषणात्मक पद्धति रे व्यवहार कर मूल्यबोध नीति और आदर्श ठारू दूरे जाई राजनैतिक अनुष्ठान और व्यवसाय संपर्क अध्ययन कर समय दार्शनिक माने सरकारी संस्था संबंध में अध्ययन करने परिवर्ते जनस्वार्थ संबलित विषय जनसाधारण व्यवहार बा आचरण सामाजिक समस्या संबंध में आलोचना करिथांती सेमाने प्रशासनिक संगठन संबंध में अध्ययन करने परिवर्ते निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित करुथिबा परिवेश संबंध में अध्ययन करिथांती उत्तर आधुनिक पर्याय तुलनात्मक राजनीति केवल उन्नत और विकसित राष्ट्र संबंध में आलोचना न करी बरं अनुन्नत जोड़ा अति गरीब राष्ट्र जोड़ा कहली थर्ड वर्ल्ड उन्नत विकासशील डेवलपिंग कंट्री ये सब संबंध में विशेष भाव आलोचना करुछि फल यह वर्तमान सार्वजनीन अध्ययन में परिणत होइछि गणतंत्र अध्ययन पई यह विशेष भाव फलप्रद होइछि भविष्य किपरि समग्र विश्व रे स्थिर शासन प्रतिष्ठा होई परिबो ता मध्य आलोचना कराइछि स्थिर शासन स्टेबल गवर्नमेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स टीवी रे देखुथबो केमिति वर्ल्ड पॉलिटिक्स परिवर्तन करूछि स्थिर स्टेबल गवर्नमेंट केमिति हेई परिबो ता विषय मध्य एई संस्था बा एई अध्ययन अधिक आलोचना करूछि नेक्स्ट रे आंतरविषयक अध्ययन जोटा कि इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी उत्तर आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिर एक मौलिक वैशिष्ट्य समाजशास्त्र मनस्तत्व नृतत्व परिसंख्यान स्टैटिस्टिक्स इत्यादि विषय संगृहित तथ्य सब संगृहित करिकी
विभिन्न तथ्य को राजनीति विज्ञान पठन दिगरे प्रयोग करा जाउछि फल राजनीति विज्ञान एक अंश विशेष रूपे राजनैतिक समाज तत्व और राजनैतिक मनस्तत्व इत्यादि गोटे नूतन विषय रूपे सृष्टि हेबाकु जाइछि। उत्तर आधुनिक पर्याय बा पोस्ट मॉडर्न स्टेज रे तुलनात्मक राजनीति को परीक्षामूलक पद्धति रे अध्ययन करा जाय। यार अध्ययन को वास्तवधर्मी करने को समस्ते चेष्टा कर जारी रखिछन्ति। एही अध्ययन को मध्य नीति आदर्श मूल्यबोध ठारू मुक्त करा जाउछि। दिन को दिन वर्तमान दिन को दिन तुलनात्मक राजनीति प्रगति पथ रे अग्रसर होउछि, एथिरे संदेह नाही। आधुनिक विश्व रे यार अध्ययन गुरुत्व माने बहुगुणित हेबाकू लागिछि। तो शेष रे जो आधुनिक पर्यायर शेष पर्याय रे जे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समस्त लोक ताकू ग्रहण करिसंती एवं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विश्व रे मध्य एक आदृत मान हेछि, एथिरे संदेह करा जिवो नाही। नेक्स्ट पॉइंट को आमे जिबा सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पिला मन जो डाकिथिले जो पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पॉइंट को आमे जिबा। तो समय सरिया पूर्व आमे यूनिट 1 शेष कर दबा। आ मात्र दुईट पॉइंट अछि, गोटला सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गोटे हला अछि कंपैरेटिव मेथड्स। ए दीटा अछि। तो लास्ट ले खाली कहि दोछि तुलनात्मक राजनीति गुरुत्व तात्पर्य। ए जो आमे जो विषय आलोचना करूचे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कथा आलोचना करूचे, या को पढ़िबा द्वारा या को अध्ययन करिबा द्वारा आरो कोन गुरुत्व तात्पर्य कोन रहिछि। प्रत्येक जिनिसर किछि ना किछि गुरुत्व रहिछि हला। तेणु तुलनात्मक सभा प्रथमे तुम कहिथिली जे आम घर पड़ोसी घर का घर सुंदर हेछि, आमे जानिले घर को सुंदर सजेबा। जे पर्यंत आमे न जानिबा कि बा कंपेयर न करिबा तले आम घर सुंदर कि असुंदर आमे ताहा केवल अनुमान करि परिबा नाही। तेणु प्रत्येक क्षेत्र रे आमे अन्य को कंपेयर करूचे, मो ड्रेस किपरि मो दोस्तर ड्रेस किपरि, ये सब कंपेयर करिबा द्वारा कोन होछि ना आम भीतर गोटे जागतिक जागतिक आइडिया सृष्टि होछि। तेणु आमे आगो को जीवा पाई चेष्टा जारी रखी। तेणु यार बहुत तात्पर्य अछि, एही अध्ययन करिबा द्वारा हमको बहुत तात्पर्य। प्रथम रहला वर्तमान या पाश्चात्य राष्ट्र जोड़ा कि अमेरिका यूरोपियन ये सब देश गुड़िक ता सहित जोड़ा डेवलपिंग कंट्री एशियन कंट्री ऑस्ट्रेलिया ये सब देश गुड़िक राष्ट्र गुड़ी समस्या और राजनीति विषय रे आलोचना करूछंती। एही विषय उन्नत राष्ट्र मान को मध्य अवहेला करी न थाए। तमे देखिथिबो सब जो G20 सार्क बा विभिन्न ब्रिक्स ये जो सम्मेलन करा जाउछि, काहे करा जाउछि ना आमे आ एकुटिया ही रहिना। द्वितीय विश्व युद्ध पर आम गोटे कौन संस्था बा गोटे ग्रुप रे जड़ित हबार होछि। आमे जदि एकुटिया हेई रही जिबा ताले आम देश डेवलप हेई परिबो नाही, पछुआ हे रहिथिबो। आमे सर्वदा पछुआ देश बोली परिचित हेबा। आमे जदि अलगा देश सहित मिसी रहिबा, वाणिज्य कारोबार करिबा, संस्कृतिर आदान प्रदान करिबा, राजनैतिक कूटनैतिक ये सब क्षेत्र आदान प्रदान करिबा, विज्ञान आदान प्रदान करिबा, अन्य क्षेत्र में आम सहयोग परिवेश करिबा ताहले कोन हबो आम देशर उन्नत हेबा सहित अलगा देशर ज्ञान कौशल आम देश में प्रणत। देखो मिलिटारी क्षेत्र में आम रूसिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस सब ज्ञान कौशल आणुचे। अमेरिका तो दौ नाही, ये सब देश में आम ज्ञान कौशल आणुचे, सब अस्त्र किणुचे है कि कहीं किणुचे ना चीन आमठू केते ऊपर पहुंच गलानी। आम जदि सेमिति रहबा से बंधुक युद्ध करवा, खंडे युद्ध करवा ताले सबुदिन आम धराशायी हो जिबा, चीन आमको अधिकार करन। तेणु जोग अनुजाई आमको आगो को जीवाक हम केमिति जीवा ए कंपनी पॉलिटिक्स दबा आमको आम जानिले करबा। चाइना राति रे युद्ध करि पारुची, तार जो एयर फ्लाइट अच्छे से राति रे युद्ध करि पारिबो, बिना आलुए युद्ध बिना आलुए टार्गेट करि पारिबो। भारत सेमिति किछि नाही। जदि आम न जानिबा चाइना सहित युद्ध डिक्लेयर करदबा ताले आम हारि जिबा। तेणु युद्ध डिक्लेयर करिया पई तार बल विषय हमको जानिबा को पड़िबो। चाइना पर केते बल अछि हला, आम बल केते आम कंपेयर करिबा। जदि ता सहित हमर बल बराबर अछि तबे युद्ध आगो को जिबा। जदि बराबर नाही आम संधि करिबा, बा जदि बल ताठुर हमर अधिक अछि
आम आक्रमण ताको अधिकार करनबा जेटा कोटी लोक कहते तेणु ये सब यार अध्ययन क्षेत्र में आमको बहुत तात्पर्य रही। नेक्स्ट पॉइंट तुलनात्मक राजनीति विषय विभिन्न पद्धति और कौशल संबंध में आलोचना करिथाए जोटा कि कहली मिलिटारी क्षेत्र में आम जो कौशल गुड़ाक मिलूँ राफेल आसला अन्य जो आसला एयरक्राफ्ट है ये सब विदेशी ज्ञानकोश तैयारी आम देश को आसला आम सब निजक अधिक शक्तिशाली मन कलु चाइना सह टक्कर देवाई आम आग को बाहरी गलु। थर्ड पॉइंट यह मूल्यबोध उपर गुरुत्व आरोप कर देख वर्ल्ड क्षेत्र आम करवा ह्यूमन रिसोर्स वर्ल्ड स्तर जब आम कंपेयर करवा वर्तमान पृथ्वीर केतोटी देश किए कहीपर वर्तमान पृथ्वी रे केतोटी देश अच्छी केतोटी देश केतोटी महादेश प्लीज हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड नाउ एनीवन प्लीज who can say how many continents in world now 189 भाई कॉन्टिनेंट्स कथा पचारुची एटा कंट्री कथा कह देलो महादेश हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स Sir, 7 continents. वेरी गुड 7 कॉन्टिनेंट्स सबटू पावरफुल कॉन्टिनेंट केटा सबटू पावरफुल कॉन्टिनेंट के सबुठु पावरफुल कंटेंट सबुठु शक्तिशाली महादेश किए वर्तमान टीवी न्यूज सब देखुथबो एशिया पृथ्वीर सुपर पावर है अमेरिका ना भाई एशिया सर पृथ्वीर सुपर पावर है अमेरिका अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब एरिया रे बड़ पावर मध्य बड़ सबुतरे से बड़ इकोनॉमी क्षेत्र में हो मिलिटरी क्षेत्र में हो सब क्षेत्र में से तो अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स मुंड रही रूसिया यूक्रेन युद्ध है अमेरिका हस्तक्षेप कला इजराइल इराक ईरान युद्ध है हमास युद्ध है मिलिटरी सेटा अधिका हाँ सर एक्चुअली पावरफुल इन द मीन्स की जीडीपी एंड पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया एंड सब मिसले जो पावर देखा जाउ सेटा एशिया सर आपन जोटा कहले सेटा मिलिटरी रे अमेरिका नंबर 1 रोटी हाँ आमे कंपेयर करूचे को कंट्री वर्ल्ड नंबर 1 सब दृष्टि लक्ष्य कला खाली ह्यूमन रिसोर्स नुहे मिलिटरी सबुत कंपेयर करवा कौ जेहेतु आम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ुचे आम वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री क्या कहवा ओबियसली आम समस्ते यूएस को कहवा कारण प्रत्येक क्षेत्र में यूएस तार हस्तक्षेप करके राजनीति कंट्रोल करुच्ची नाटो को कंट्रोल करुच्ची देख यूरोपियन यूनियन बा नाटो को गुड़े देला अमेरिका गोटे देश नाटो का तुम जाओ तुम किसी ट्रम्प कहला सीधा यूक्रेन मैटर रे नाटो कौन करिवो जे पर्यंत अमेरिका न मिसिची जे पर्यंत अमेरिका किछि न कहिछि नाटो किछि करि परिबो तमे नाटो भलिया जो यूरोपियन कंट्री जोडी मिसी नाटो तयारी करचंती सैन्य सामंत अमेरिका को बेखातिरी कला काहेकि ना अमेरिका होची सुपर कंट्री बर्तन पावर रे लाइक से दृष्टि आमे आमे निश्चित भाव में आमे यही जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अध्ययन करबा द्वारा हमकु बहुत तात्पर्य बा गुरुत्व आमे सब पाई थाउ विज्ञान अग्रगति गमनागमन जोगाजोग क्षेत्र में हम आउ छाड़ी गली वर्तमान 194 कंट्री आम जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट देती वर्तमान 194 देश रजिस्टर्ड देश भाव परिचित होती 194 मतलब लिखि नब 194 देश वर्तमान पृथ्वी रे 194 कंट्रीज आर रजिस्टर्ड अंडर द यूएनओ बाय द रिपोर्ट ऑफ यूएनओ ओके विज्ञान अग्रगति गमनागमन जोगाजोग क्षेत्र में संगठित प्रगति हेतु तुलनात्मक राजनीतिर गुरुत्व क्रमश वृद्धि पाउछि बर्तमान तो आम जगत पहुंच ग्लोबलाइजेशन पहुंच गलानी ग्लोबलाइजेशन एच घरे बसिक वर्ल्ड देखुचे निज आंगुली आंगुली अगरे आम सारा वर्ल्ड र खबर रखुचे ग्लोबलाइजेशन जुगरे आमको आ किछि अछपा नाही कि आम गोटे राष्ट्र मध्य सीमित ना आम सबुआडे माड़ी गलुनी गोटे देशर लोक अन्य देशर शासन संपर्क में जानी पार्छन अमेरिकार कौन है आम एक डायरेक्टली आम देख लाइव देखि पारुछु खबर बुझी पारुछु सेठी बम ब्लास्ट है टेररिस्ट आक्रमण कला आम सीधा देखि पारुछु वर्ल्ड रो पॉलिटिक्स को आम देखि पारुथिबारु आम सेति सचेतन हो जाउछु मन कर पाकिस्तान टेररिस्ट आक्रमण कला जो बीएफएल जो ट्रेन हाइजैक करनेला इंडिया सजग हो गला काले आम आड़ को मारी आसबे कि बांग्लादेश जो गृह विप्लव है सिविल वार है
इंडिया में सचेतन हो गला जे काले से इंडिया में पशि आसबे कि तेणु ये जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आमको बहुत किसी ज्ञान आहरण देता है जदि आम चुप बसते बांग्लादेश होचे आमर कौन हम आम कौन असुविधा हो सब बांग्लादेशी भारत भीतर पशा भारत में गृहयुद्ध आरंभ होता तेणु गोटे देशर लोक अन्य देशर शासन संपर्क जापर अन्य राष्ट्र को लक्ष्य करी निज राष्ट्र को आगे नेबाकू यही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स साहाय्य करिଥାଏ कौन सी राष्ट्र रे विप्लवर कारण जानिबाकू हेले ए दिगरे तुलनात्मक राजनीति मध्य आमको साहाय्य करिଥାଏ तुलनात्मक राजन अध्ययन करने द्वारा गोटे देश अन्य देश ठारू आगो को जीवा पई सर्वदा चेष्टा करिଥାଏ ओके बतराउ 25 मिनिट्स अच्छे आम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा कंपैरेटिव मेथड विषय जीवा मु नेक्स्ट क्लास अधिक किसी एक्सप्लेन करी खाली जस्ट जो अप्रोचेस विषय शैली विषय मुझे आलोचना कर दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है आमर कंपैरेटिव मेथड देखो पिला माने कंपैरेटिव मेथड लिख लो आम मेथड बा अप्रोचेस पढ़िया अप्रोच है शैली कौन सी विषय ओरिजिन को जानापी तार ओरिजिन को आम अध्ययन करने को पड़ी था कहुए अप्रोचेस है तो से भाया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आम जानापी तार ओरिजिन को आम पढ़ा पड़ो से ओरिजिन बा अप्रोचेस गुड़िक केते प्रकार आम आलोचना करवा दी भाग आलोचना कराई गोटे ट्रेडिशनल अप्रोच आउटा मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच कहा जाए मॉडर्न अप्रोच को कंटेम्पररी अप्रोच कहा जाए ट्रेडिशनल अप्रोच भितर दार्शनिक शैली ऐतिहासिक शैली अनुष्ठान धर्मी शैली वैधानिक शैली बाह्य गठन बा रूपरेख शैली अंचल भित्तिक शैली समस्या भित्तिक शैली ये सब अध्ययन करवा जदि आम मॉडर्न अप्रोच से देखा समाजतात्विक शैली मनस्तात्विक शैली अर्थनैतिक शैली परिसंख्यान शैली मार्क्सवाद शैली अनुरूपकरण शैली व्यवस्था ज्ञापक शैली स्वरांचनात्मक कार्यात्मक शैली साइबरनेटिक शैली व्यवहारवादी शैली आउ उत्तर व्यवहारवादी शैली ये सब आम अध्ययन करवा जस्ट लेखिन पिला माने डाकी कौ कौ शैली गुड़ाक गोटे पर गोटे एक्सप्लेन करवा एक नंबर है ट्रेडिशनल अप्रोचेस ट्रेडिशनल अप्रोचेस देख लो सब पॉइंट देख नंबर लेख पॉइंट देखी फर्स्ट है philosophical approach to historical approach 3 legal approach 4 institutional approach Sorry, sir. institutional approach मेन पॉइंट लेख मॉडर्न अप्रोच रे मॉडर्न अप्रोच कोड़ा जाउची सोशियोलॉजिकल अप्रोच साइकोलॉजिकल अप्रोच थ्री नंबर इकोनॉमिकल अप्रोच फोर स्टैटिस्टिकल अप्रोच
5 मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच বা मार्क्सिज्म अप्रोच। नेक्स्ट सिस्टम अप्रोच, लिखुछ तो। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, एथरे गोटे क्वेश्चन आसीबो अप्रोच रे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट साइबरनेटिक्स अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, नेक्स्ट पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। हला एति की अप्रोच पर गोटे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। आ जो पढेली कंटेम्पररी सिग्निफिकेंस तात्पर्य ऊपर तापर मध्ये गोटे क्वेश्चन आसीबो। हमर सब टॉपिक सला परे मु पॉसिबल क्वेश्चन मध्ये कतरा दे देबी। मु बर्तन फास्ट डिस्कशन करछि अबाउट द फिलोसॉफिकल अप्रोच। जते प्रकार अप्रोच अछि सबुठु ओल्डेस्ट अप्रोच होछि philosophical approach. Philosophical approach is the oldest approach to the study of politics. It can be described as a normative or ethical approach. It advocates the study of a state as the philosophy of a state. Questions like the nature of a state, ends of the state, the ideal relationship between individual and the state. From the core of this approach, it seeks to theoretically and ethically discuss and gives answers to these questions. It aims at providing true knowledge about various political institutions which can be used for their reforming and building of a best political institutions. The philosophical approach discuss at length the question of ends and means of the seek to advise the rulers or statesmen to pursue the higher and nobler ends of the specified by the political thinkers. The great political contemplators from Plato to Leo Stratos and Eric Vagelin. सबुठ कथा आमे कहा कथा कहबा प्लाटू अरिस्टोटल से माने दार्शनिक थिले हला से माने ठू पॉलिटिक्स टी आरंभ हेची। तो दार्शनिक शैली होची सर्वठू प्रथम शैली भाबे ग्रहण करछि। बहुत पिला कहउचंती जे ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच। नो, फिलोसॉफिकल अप्रोच होची सबुठू ओल्डेस्ट अप्रोच। कारण तुलनात्मक राजनीतिर एक पारंपरिक शैली बा दृष्टिभंगी हिसाब रे दार्शनिक को अधिक गुरुत्व दिया जाय था। कारण दार्शनिक माने ही ए तत्व पर अधिक गुरुत्व देथिले। प्लाटो और अरिस्टोटल परे अनेक ग्रीक दार्शनिक एई शैली रे प्राथमिक संस्था हिसाब रे गृहीत होइथांती। ए माने राष्ट्रर प्रकृति उद्देश्य निरीक्षा कला बेले किछि धारणा और सिद्धांत को विचार को नै थांती। एई दृष्टि रे राष्ट्र सरकार जनसाधारण व्यतीत सत्य नैतिकता और मानविक आदर्शवाद संपर्क अध्ययन करिथाए। प्लाटो अरिस्टोटल ये 5th सेंचुरी रो लोक हला 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी रो लोक सेते बेले से माने से द पॉलिटिक्स द रिपब्लिक लिखिथिले। देखो 5th सेंचुरी लेखा आइतिबा बही आज भी तार वैल्यूएबल बा मूल्यबोध भित्तिक पुस्तक भाबे ता अध्ययन करूचे। ता आगु को मध्य अन्य माने अध्ययन करूथिबे। आम सार माने करूचे आमे करे तमे करबो आगु मध्य करिवे। तो ये बही रो बहुत किछि वैल्यू रही हला। देखो ओडिसा कथा मालिका कथा कहबा
इट इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल अप्रोच मालिका केबे लेखा होता 13 सेंचुरी रे तो एबे से कथा को लोक मैंने ग्रहण कर सत्य बोली भावुंट तेणु दार्शनिक माने जहाँ दर्शन शास्त्र दर्शन दे जाती ताहा जुग उपयोगी होली होता है बोली आमे जानी था तेणु आमे जदि एग्जांपल लिखिबा द पॉलिटिक्स द रिपब्लिक है ये हूँ सबुठु ग्रेटेस्ट एग्जांपल प्लाटोंकर दि रिपब्लिक आरिस्टोटलकर द पॉलिटिक्स से भलिया जॉन लॉकंकर सेकेंड ट्रिटीज आउ एब्सोल्यूट मोनार्की होची जॉन लॉकंकर मध्य ये सब होची माकियावेलींकर ये होची दार्शनिक तत्व। नेक्स्ट पॉइंट जिबा हिस्ट्रिकल अप्रोच इतिहास जदि मूल हुए राजनीतिकतार फल तो इतिहास बिना राजनीतिर स्थिति ना इतिहास आम अतीत को न जानिले वर्तमान भविष्य स्थिर कर पारिबा ना तेणु इतिहास को आम अध्ययन करने को पड़ो हिस्ट्रिकल अप्रोच रो आवश्यकता रही हिस्ट्रिकल अप्रोच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इट एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एज द हिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस the present as well as for the analyzing the future for studying the history of state and other political institutions this approach advocates the study of the socio-economic conditions and crises of the past and the impacts that left on their minds of great thinkers. For example, analyzing the conditions in ancient Greece and the reactions of Plato and Aristotle to these conditions can help us to analyze the nature and functions of a Greek city test. Likewise, by analyzing the conditions of the 17th century and the ideas of Hobbes and Locke, the conditions of the 19th century and the ideas of Mill and Marx, we can analyze the nature and functions of the state in the past. This can also help us to understand and explain the nature and rule of the state in the 20th century. As such as training and analyzing the history of political institutions, we can understand the nature and functioning of contemporary political institutions. Political philosophy, political action, political thought, and political theory are always affected by determined by the political and socio-economic conditions which prevail at the given period of history. Historical approach has been another popular approach to the study of political science. Aristotle used the method of historical observation for describing the nature and functions of Greek city-states. The first modern political thinkers Machiavelli used the historical approach to explain the justify these political ideas. The contemporary time George H. Sabine has been the representative of this approach. George Sabine seeks to combine the historical approach with the philosophical approach, analyzing such as the efforts of and part of the Sabine. ऐतिहासिक प्रवेशशैली रे तुलनात्मक राजनीतिर ऐतिहासिक शैली बा दृष्टिभंगी सामाजिक गठन रूपांतरण प्रक्रिया को अध्ययन करिथाय। यह विभिन्न राष्ट्रर सामाजिक गठन और प्रक्रिया को तुलनात्मक भावे परीक्षा करिथाय जहाँ एक साधारण ढांचा सृष्टि रे साहाय्य मध्य करिथाय। सामाजिक प्रक्रिया रे परिस्थिति और आवश्यकता एवं सामाजिक परिवर्तन रे यार भूमिका को ऐतिहासिक भावे अनुधान करा जाए। अरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, हिगेल यही सब दार्शनिक मध्य मुख्य प्रवक्ता अटंती। यही दार्शनिक माने ऐतिहासिक घटना उपादान प्रचलित परिस्थिति इत्यादि को अनुध्यान करी भविष्यत लगी पदक्षेप ग्रहण मध्य करिथांती। यह व्यक्तिर उद्देश्य कार्य उपलब्धि
विफलता एवं ऐतिहासिक घटनावली तथा परिवर्तन संपर्क में आलोचना मध्य करिथाए। ऐतिहासिक शैली अनुसार गोटे राष्ट्रर सामाजिक अर्थनैतिक समस्या परिस्थिति दार्शनिक मान तरफ जो प्रभाव पकाए से राजनीति तत्व मध्य सृष्टि होता है। जदि आम आम कथा कहबा ऐतिहासिक भारत हिसाब से बही लिखाई भारतीय माने जोटा आलेक्जेंडर से पढ़ी भारत को आक्रमण करते से इतिहास बही पढ़ी भारतीय माने भारतर लोक माने घीओ महुरे भासंती ये जो शब्द सी पढ़ी तेणु भारत को जय करने भारत को आसापी से लक्ष्य रखी तेणु एम जना पड़ुची जे भारत पूर्वर गोटे धनशाली राष्ट्र थिला बोली निसंदेह। तो से तो आलेक्जेंडर सुदूर ग्रीस रु एशिया महादेश डे भारत में पहुंची थे। जदि आम से कथा को जड़े भारतीय हिसाब से मन पकेबा इंडिया वाज ए वेल्थ कंट्री वाज ए रिच कंट्री बर्तमान में भिकार देश पलटि जाए कॉलोनियलिज्म पीरियड रे इंग्रेज माने भारत को पूरा दरिद्र कर देछंती। यदि आम पूर्व कथा को मन पकेबा आमर इतिहास को मन पकेबा आम भारत में केते धनी थिले ताको पुनर्बार मन पकई पुणी आसंता भविष्य को आम तैयारी करि परिबा। तेणु वर्तमान भारत पृथ्वीर तृतीय बृहत्तम अर्थनैतिक राष्ट्र भाव में छेड़ा होबाक जाउछि जहाँ इतिहास लेखा जाइतिला पास्ट इंडिया विषय फ्यूचर इंडिया मध्य ताहा सत्ता हो जाउछि। जदि आम ताहा न पढ़ी थांते आम अलसुआई थांते हाँ भारत गोटे गरीब देश भारत कौन अच्छे भारत में एमती आम से आम युव शक्ति बा श्रम शक्ति को अपचय करते आम जो ह्यूमान पावर टाला ह्यूमन रिसोर्स टाक आम वेस्ट कर दे था जिते आम इतिहास को पढ़लु हाँ इंडिया वाज ए वेल्थ कंट्री से ना आम पुणी धनी हबू आम पुणी पृथ्वी नेतृत्व नेबू आम जाग्रत हेबू तेणु आमको आगू जावाक पड़ो ए सन्देह ना। लास्ट पॉइंट आम खाली कहीदे लीगल अप्रोच लास्ट आम छुट्टी करदे। The legal approach advocates the study of law, legal powers, and formal governmental institutions and process. The government of the states is a creation of law. All political institutions are organized under law. These always work as per their legal powers, functions, and positions. The state itself as a legal personality. Hence, the study of a state government and all the other political institutions essentially requires the study of the constitutions, the law and the legal process and their historical legacy. Legal approach advocates the study of the constitution, the laws, the history of evolution of political institutions in terms of their organization and powers. Sovereignty of the state is legal supremacy and supreme power of the state. It is the sovereign law-making association of every society. It has the legal provision, legal personality. Its government is organized under law. So, legal बा वैधानिक शैली रे जे राष्ट्र आईन प्रणयन और कार्यकारितार केंद्रीय अनुष्ठान रूपे विवेचित होता है। न्यायपालिका आईनगत संस्था आईनगत प्रक्रिया यही दृष्टिभंगी सहित संश्लिष्ट थाए। देख जो देशर आईन न्याय जिते सुदृढ़ से देशर शासन व्यवस्था सेते सुदृढ़ अटे। राष्ट्र आईन मूर्तिमंत प्रतीक बोली जेसी जोहेरी मत दियंती। हब्सଙ୍କ दर्शन राष्ट्र बा लेवियाथानर मुख्य सर्वोच्च आईनगत कर्तृत्वर अधिकारी एवं तांकर आदेश ही आईन जहाँ को लोक माने प्रकृति राज्यर अराजकतार मुक्त हेबा जोगु मान्यता प्रदर्शन करिथांती। यही दृष्टिभंगी रे समर्थक माने आईनर शासन बा रूल ऑफ लॉ एवं आईन सह स्वतंत्रता और समानतार संपर्क उपरे गुरुत्व आरोप करछन। तो आम वर्तमान जो तैयारी करिछु जे आईन आगरे आम समस्ते ऑल आर इक्वल बिफोर ऑफ द आईज एटा मते सही लीगल अप्रोच रे ग्रहण करा जायछि। हेलो।
आज ये थाऊ आम नेक्स्ट क्लास रे बाकी टॉपिक गुड़ा पढ़ा जदि कार डाउट अच्छी एनीवन प्लीज आस्क मी जदि कार डाउट अच्छी आज जो टॉपिक आम पढ़ले मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव्स नेचर एंड स्कोप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपैरेटिव मेथड अल्प किसी पढ़ीचु आउ कंटेम्पोरारी सिग्निफिकेंस हम पढ़ीचु तेणु ये सब विषय जार किसी डाउट अच्छी तेज से पचारि पारती पाने जहाँ पढ़ा जाऊँगी बुझी होची तो बहुत लैंग्वेज यूज करुच्ची इंग्लिश एंड ओडिया कहीं जेहेतु ओडिशा पिला ओडिया पिला बहुत अच्छा तो से ओडिया लैंग्वेज आवश्यकता रही बुझी होची तो मतामत दियो आज्ञा सर गोटे कथा पचार Yes. मु कहली जो क्लास रो रिकॉर्डिंग मिली परिबनी शुणु ये लिंक टा आसूची पूरा Okay. भुवनेश्वर हमर जो हेड ऑफिस रो आसूची आमे खाली लिंक नौचे क्लास करूचे रिकॉर्डिंग तांक पाखर अछि सारंग पाखरे जदि तांको इग्नू का मागेबा ताल से दे पारिबे आमे जहा पढौचे तार डिटेल्स रिकॉर्डिंग हेकी रहउची तेणु जदि कहबो Okay, sir. जे आम तो एलाउ नाही तो व्हाट्सएप रे आमे मु किछ क्वेश्चन दे देबी डोंट वरी मु क्वेश्चन दे देबी एग्जाम पई क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन ताको डिस्कशन मध्ये लास्ट क्लास ता मु पढेबिनी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन देबे और डिस्कशन करिबी जोटा ते आराम से परीक्षा लिखि पारी आज्ञा आउ कार कोन डाउट अछि सर ऑलरेडी गोटे व्हाट्सएप ग्रुप गोटे अच्छी सर आपण चाहिले सर सेतरे ठीक अछि व्हाट्सएप ग्रुप जदि व्हाट्सएप ग्रुप अछि बेटर हबो मते जो आमे जो अप्रोच पढेबे नेक्स्ट क्लास खाली सब अछि मॉडर्न अप्रोच ता सब डायग्राम अछि मु व्हाट्सएप ग्रुप रे पठे दे पारि किछ मते व्हाट्सएप रे जॉइन कर दे एरा मु व्हाट्सएप ग्रुप रे नाही मु एथिरे जो आरसी ग्रुप रे अछि विभिन्न मॉडल अछि सर आपण नंबर दे करी निश्चित लेखत मो नंबर 95 9583 5823 95 once again 9583 5823 95 जदि डाउट थिबो मते ऑफिस आवर पचार पाइले मु यार आंसर भी दे पारिबी तो आज क्लास प्लान केमिति लागला तो मतामत सर दियो आपण को से ग्रुप रे ऐड करि पारिबी तो हां कर दो किछ नै आज क्लास ता आपण मन एक्चुअली केमिति सर लागला सेतरे भी अन्य सर माने भी अछंती जो माने पढाई थिले अछंती तो सेतरे आज क्लास सर बहुत बढ़िया थिला एक्चुअली टिके स्लो आउट टिके टाइम टेकिंग पढले पिलांते सर बुझी पड़तो हम टिके अच्छा निश्चित भाव पर ध्यान देबे नेक्स्ट क्लास मु आउट टिके स्लो कर देबी और ऑडियो भाषा गोटे ऑडियो बोल करिया वाला टिके और स्लो कर देबी किछ नै नेक्स्ट सजेशन आउ के सजेशन यदि पिला माने हम पढिबार मूल्यटा रहिबो पिला मु पढेबी जे पिला बुझि न परिबे तन से वैल्यूलेस स्टडी हला कि जो मो मता मतटा आपणको पढ़ाटा बेसी भल लागला आउ कोन सजेशन दो कोन केमिति पढले हम पिलार हृदय को छुई परिबो टॉपिक टा से बुझी परिबो से टॉपिक भीतर निजे जड़ित हे परिबो हां मु पॉलिटिक्स यही देखु अछि बेसी कष्ट टॉपिक न बहुत सहज टॉपिक टा जो आर जो नेक्स्ट क्लास टा टिके कष्ट पड़ा अछि काहे ना एटा जो मॉडल गुडा को अछि डायग्राम अछि ता पर बाकी आको बढ़िया बढ़िया टॉपिक अछि बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर अछि आ मतामत दियंतु सर ग्रुप रे ऐड कर देछि आपण हां हां आसी गलानी आउ कोन मतामत दियंतु किछो ए पेपर तो बढ़िया मार्क रहबो मु सिलेक्शन क्वेश्चन दे देबी बढ़िया मार्क रहबो किछ टेंशन नै सर बाकी पेपर रे भी टिके जदी ये माने ये क्लास होइला पर सर एग्जाम पूर्व जदी आपण जदी टिके चाहिबे सर अन्य पेपर रे भी टिके जदी हमें बुझिया चाहिबो तो वास्तव रे टिके निश्चित भाव रे पॉलिटिकल से जेतुडा पेपर अछि ऑल इन वन सब पेपर आंसर मत किछ असुविधा नै okay once again thank you sir welcome to all of you on the behalf of
Indira Gandhi National Open University, Bhubaneswar. Welcome to you. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome to everyone.